Welcome, guys. This is Third Officer Abhishek Gupta, and he is sailing as a third officer in MSc. And this is Cadet Yash, and he is in Fleet. And as you know, I am Cadet Abhay Pratap, and I'm in Scorpio. Yeah. So today's topic is general queries जो लोग पूछते रहते हैं. So first of all, common questions जो पूछे हुए हैं पहले से वो continue होंगे, and then जो भी आपको questions है, you can put it in the comment section and we'll reply to it. ओके सो अभी स्टार्ट करें या फिर 5 मिनट वेट करना है ऑडियंस थोड़ा और. Okay, so just a correction to Abhay. I just received 2 days back a call from the company, and now it is second officer. Just to ओके mention that. सेकंड ऑफिसर या कांग्रेचुलेशन सर. Thank you. Thank you. All right. So should we wait or should we start with it? No, you can start with the questions if you have any of the questions in the pipeline. We'll discuss those, and further we'll be discussing the questions in the comments by any of them. Okay. Yeah. So first question is the most commonly asked question: how to join merchant navy? So yes, sir. You take it. I guess I cleared it before as well. I've been answering this from a long time, so Yeah, this will be answered every time. yeah. एक और आंसर कर देते हैं आज. Actually, I've Short done it के अंदर. offline, and nowadays it's gone online. So I guess you can answer it better. Okay, so how should we join merchant navy? So first process क्या होता है? You need to do IMU CET. So IMU CET का एग्जाम दिया, then you need sponsorship if you are doing DNS. तो अलग अलग वो होता है, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है. बट इफ यू वांट टू जॉइन एज अ डेक ऑफिसर, सो पहले IMU CET होगा, देन यू नीड टू गिव स्पॉन्सरशिप टेस्ट. उसमें एक रिटन टेस्ट होता है एंड देन इंटरव्यू होता है. देन आफ्टर दैट जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, यू नीड टू क्लियर मेडिकल टेस्ट, एंड मेडिकल टेस्ट के बाद यू कैन ज्वाइन एज एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर आप ज्वाइन कर जाते हैं. 1 ईयर का DNS कोर्स रहता है. सो दिस इज हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज अ डेक ऑफिसर. And second question is how to choose a company as a cadet and what should be the priorities? Like Abhishek sir, yes sir, anyone? Okay, So, yeah, continue. I'll take that. Go on. I guess one of the basic things is that the company should have, kind of like it should consist of all kind of vessels. Okay, because most of the companies are filled with just dry vessels like containers or just bulk. For example, MSC or Dockindale. Other one is the most important one, which is waiting. The waiting period matters a lot. It depends. Like it can go up to 9 to 12 months as well in some companies, and in some good companies like Synergy or Scorpio, it's as less as 3 months. So waiting is a very important aspect. So please look into that. And the third one is don't go after agents. That's the most important one. I must mention that. So that's from my side. If anyone wants to add, they can. Yeah, Abhishek sir, anything? Yeah, I think he has summed up all the things, most of them. But just a single advice, I think so, is required. That what I suppose, since I was doing my pre-C 7 years back, a lot of things have changed by then. COVID has changed everything upside down, but still, it would be more appropriate and more better and more secured if you have a company prior, like commencing your pre-C. It is not like that there are no campus placements or there are no companies coming in the pre-C college. Maybe IMI, maybe ARI, maybe TS Rahman, wherever you are placed. But you are more secured. You have more better options of getting placed as soon as possible. As soon as you complete your diploma, your DNS. So it would be more appropriate if you have a company before you start your 1 year diploma DNS. That's all. Okay, so to just sum it up, first point is different types of ship होनी चाहिए. Second point is you should never go via agents, and one should always keep the waiting period in mind. And it is always better to have sponsorship beforehand. Right. Okay, Other than that, so if you are doing some deep research, then you can always look if the company is ownership or a management. Both have their perks and cons, so you can look into it. I agree with that. So third question is, as we all are from IMI, Abhishek, so you also are from IMI, right?
Yeah. Yeah, so as we have all studied in IMI, the next question is how to get selected in IMI and your experience in IMI. So how is it, See, how the colleges and all? see, for me, it was not of my option. It was not my choice. Uh, I will tell you my experience. I first of all, the first step for me was I appeared for the IMU CET, Indian Maritime University Common Entrance Test, and after appearing for that, I waited for my result, which took around 1 month. After my result was declared, I appeared in a lot of companies for the pre-sponsorship. Pre-sponsorship does not mean that the company is paying for any of your expenses. It just only means the company has recruited you. Because a lot of people have come up to me asking that pre-sponsorship means that company is giving the fees of your diploma, DNS, or any other expenditure, but it is not like that. So it is just that you are being placed by shipping company. So I was placed with MSC. I gave a interview and what do you call this written entrance test for MSc. Further for that, after by that time I had my IMU CT result. It was I passed that exam, and then they made me appear for a medical test, which is for getting entered into a PC college. And it was by MSc that they told me to enter into IMI. Since MSc sent into two PC colleges, it is CS Raman in Navi Mumbai in Maharashtra, and the other one is IMI in Greater Noida, Uttar Pradesh. So I was being ordered to send into IMI, so I appeared into that. So this is the way Okay, I entered into IMI. okay, yes, sir. Yeah. Yeah, well, my story is kind of same. But I also got pre-sponsored. So, guys, it's not necessary that you give IMU CET first and then start looking for colleges and companies. You can always look out for colleges and contact them with for any queries. I believe most of the colleges conduct these sponsorship exams before IMU CET commences. Especially the ones especially the companies who have their own training institutes like Great Eastern and Anglo Eastern. So I did the same. I applied in three colleges. IMI was one. So I gave the pre-screening test, and at that time it was physical. Nowadays it's online. So I went there, gave the test and interview and all. I got cleared. Then my resume was sent to Fleet. Uh, After a month, Fleet called me to their headquarters, and I gave the test and interview over there in their headquarters in Gurgaon. I got selected, and then once you get selected through IMI, you have to join an IMI only. So that's one of the thing. So yeah, that was it. I got into IMI. Been there for 2 months, then studied online. Again, practicals for 2 months, then completed my course. That was the story with Abhay as well, I guess. So yeah, all in all, it was fine, no issues. Same with me, I was pre-sponsored, the same story. And for IMI, like if you want to choose IMI, so you can just apply in IMI. They'll take your written exam and then they'll take your interview. Then they'll notify you whenever the company comes. So it is not sure like many cadets do that. They apply in colleges, they get selected in colleges, but then they don't apply for sponsorships. So that's the biggest problem. You should always apply for sponsorship even if you're selected by a college. The college is only there to notify you that the company will be coming. So that's the part of the college. The next question is what are the duties of cadet? Um, Abhishek sir, yes sir. So okay. So before that, I will be asking. Okay. So yes, I think you are recruited by Fleet. Is that correct? Yeah, Okay. So you have been on board. not yet. Okay. Yeah. Okay. I think we were in communication last year. So still your exams are pending, or what is that? No, nothing is pending. I have signed the readiness and still waiting. Okay. It's And just the backlog. you That's why I are said I clearly mentioned that always look into the waiting part. That's it. Waiting period. yeah. Yeah, the Correct. fleet waiting period is quite long. Okay. So you are also in PW. Is that correct? No sir, I'm in Scorpio and I had just completed my DNS and my documentation is going on. My DC dangerous cargo is pending and rest all is Yes. completed. So I'll be lined up Okay. soon.
So any idea you will be going on a tanker, chemical tanker, oil Yeah, tanker? oil chemical tankers. Okay, great, great. So the question was duties on board for a cadet. Yes. So more focus will be from my side for a container ship since I'm into container market. So on board a container ship, the duties of a cadet, to be precise, is learning. Learning in all aspects as much as he can. The first month or second month, I would say. Normally in MSc, I'm in MSc. It's a 9 months contract. So in 9 months contract, the first month and second month, all months, but the prior concern should only be safety. Since we are recently in 2021, before ending, we have heard a lot of incidents happening in 21 with third officer committing a suicide, chief officer drowning into water, and it is endless in all the years. But 21 ending was not good since the incidents, what I heard, I read, were too much, enormous. So for a cadet, it is much more devastating. So you need to be clear that what is not right for you. Even if someone is giving you some order, asking you to go into some situation which you think is not appropriate. So I think you should have that confidence to ask him a question that why like this. Like I will give you my one example later on. We'll discuss. So the duties will be basically you will be assisting your chief officer. Your chief officer normally in all companies be your training officer, and he will only be asking you the questions as per your DLP, which is given by the DG shipping, and signing all your required tasks for your further second mid exam. So you will be assisting him in ballasting, deballasting. You will be assisting him in sounding of ballast tanks uh, later for your own tasks which you have been given by the DG shipping. You have to accomplish those tasks, which includes spending some time with third officer as your first promotion after you complete your second mate will be third officer, which includes learning about LSA, FFA, the brief knowledge. So, which comes into later part of your contract, maybe after 5 or 6 months. But your initial stage will be understanding very basic idea and terminology about ship, which includes basic idea about ROR, basic idea about ship operations, understanding about various knots, which I think the cadets who are currently into pre-C, so they know we have n numerous of knots we have into our seamanship book if we go through. So, and I suppose in the cadetship time, you should more focus into deck work because once you complete this time, you will be having very less time for deck jobs. Then you are only left with giving the deck jobs instead of learning the deck jobs. So this time must be more spent in deck jobs instead of learning the chart work, learning the practice planning. You have time in your second contract as a cadet to learn which things. First contract should be spent from the scratch, from the base, which means the deck. Spend time with bosun, learn about the various aspects about the paint job, first coat, second coat, preparation of deck before painting, and a number of things. And later jump into the shoes of an officer because you have your second shift of 9 months waiting for that. So I think that's the idea. Okay, sir. Thank And you. yeah, Yeah. Sir, do you want to add something? Yeah, that's more or less the same thing that I was gonna say. Like, all I know Yeah, is so the the duties that basic duty cadet. is that they have to learn everything they can because they'll be spending more time and not commanding them, but instead of just learning, going on the deck and all working with them. Right? Yep. Okay. So the next question is, what is the working time on ship of a deck cadet? And like, is it very busy? Do they get some rest hours? And what are the rest hours? And is yeah, it, absolutely. yeah, Absolutely, they get rest. It cannot be that cadet is working. I have seen a lot of people on different life sessions. I'll not say that it is wrong or that attitude is wrong. A cadet should be expected to have a learning attitude, but that does not mean he is available for anyone 24 hours. He is a human being at the end of the day. He is not an animal or he is not a machine. All right. So he is expected to get a minimum amount of 12 hours of rest
at least. As per MLC, if you see MLC 2006, the convention says a variety of principles should be applied, should be accomplished, should be followed for all persons, irrespective it is a crew, irrespective it is the officer or the trainee or the ratings, whoever it is. I am not complying that. If I am saying 12 hours a rest the cadet should get, that means I'm not complying that. As per MLC, you should get 14 hours a rest. Your working should be 10 hours a day. And further, many more things, that is 77 hours of your rest in a week, a lot of things. I'm still not complying that because on board, ship demands job, but the rest should be given for the safety of each and every crew on board. Right. So I guess 12 hours of rest each day without fail, at least, without any compromise, should be given to each and every. So basically, you will be working with chief officer. Maximum companies have that principle: 4 to 8 morning watch, 4 to 8 evening watch. It's totals up to 8 hours a day. Further, more 4 hours is like normally what I used to do in my cadet shift was morning 4 to 8. Then I around 7 o'clock. He also used to leave me to freshen up and my morning duty, breakfast. And 8:30, I used to meet him up back in ship's office. We used to go for a deck round for ballast tanks, ballasting or deblasting, whatever we have. He used to give some time to me about learning more about deck structure, terminology, and various things. And around noon time, I used to get rest after lunch. That is 12 to 4. And again, 4 to 8 evening watch and 8 evening 8 I'm in my cabin. That was my routine. So I think 12 hours a day. Okay, sir. Okay, so it's like 4 to 8 watch, morning and after in the evening, and Yeah, then between those 4 hours you learn something, you work on the deck and all. absolutely. That's basic. Because morning and evening watch, I was spending time with him. So he used to tell me go and make a lot of things on bridge, whatever he used to give me. Sometimes he used to tell me go and read this rule number 5, let me know what it Yes, is. sir. And sometimes that he also was quite keen about making things learn practically. So he used to develop a situation which includes the use of that rule and then make me understand in a more better way that see this is the way that rule was and this is the way I'm taking the action now. So that helped a lot. Okay, okay, sir. Thank you. The next question are there any companies who give sponsorship at the age of 22? Many guys have asked this question. Of course, why not? Because you are completing your 10 plus 2. Uh, I think minimum age is 25. So below Yes, 25 is sir. acceptable. Above 25 is not acceptable. But below 25 at any point of time, you can be Yeah. recruited. Sir, the thing is that during sponsorship, they ask for a minimum. Different companies have different requirements. So, getting a sponsorship at that age is like you have exhausted most of the options of the good companies. Like MSc takes maximum age is 19 in MSc for a person to get sponsored. So, the Yeah. better option, in my opinion, will be doing BSc because BSc or marine engineering. See, if you do marine engineering, then they cannot say you 19 because completing marine engineering will take 4 hours after 10 plus 2. Yeah. Yeah. No, I'm talking about pre-sponsored in DNS. Yeah. Okay. Pre-sponsored about DNS. So pre-sponsored, then of course they can put a bar of Exactly, sir. 19. Exactly correct. Then you Some cannot. companies have a condition that the guy should not have a break after 12th or a Exactly, break sir. Yeah. between 10th and 11th. So that's also a thing. But there Hmm. are companies which obviously takes the guys with by In age my of 20. opinion, Dynacom and SCI are the known companies that take Yeah. SCI and Dynacom. Yeah. Even Dockendale takes guys with 2024. And Goodwood also, I guess. Goodwood also takes the cadet. Other Yeah. than that, there are petty companies that take. Like I had one guy who came after doing BSc in English. Like he was 24, but he was in VMS. So that's The next usually question is what is the yeah. so the best is to get a company in time. The next question is
Someone is saying Scorpio also, but I don't think Scorpio will take guys who are more than 20. I guess the cap is 20 in Scorpio. Yeah. Next question is, what are the duties of third officer? Like when a person gets promoted from cadet to junior officer or third officer, what are the major duties of third officer? What are the departments that are handled by third officer? See, firstly, after segment, I think now maximum companies do not promote you as third officer directly, since a lot of companies have either the ranks of junior officer Yeah, there is and there is a discussion third also. What is the officer. rank of junior officer? Yeah. So there is already a third officer and you go as a junior officer. So you have one senior rank above you is third officer. Or you may be named as assistant third officer. Any of these two ranks you will be named depending on the company. Like in MSc, we were as junior officer. So as junior officer, your basically duties are same as third officer, but you are assisting third officer. You are not the in charge of an independent navigational watch. So normally, depending on master, uh, sometimes like in MSc, we don't have a cadet, which is I think not a good idea because a lot of people suffer. Even I suffered since we don't have a cadet, and if the ship requires a chief, that the chief officer should have a helping hand with him. So your little bit more of the time goes with the chief officer, and the time which is required to be spent with third officer to learn his jobs, you spend that amount of time with chief officer doing the same things which you have done already in your cadetship. So, which is not a good idea. But yeah, if there is a cadet, so basically your job, which is other companies, I think, your jobs will be spending time with the third officer and learning the LSA and the FFA, the life saving appliances and the firefighting equipment or firefighting appliances, and understanding various requirements since the maximum things like if we say in a layman's language rectification. तो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो रेक्टिफिकेशन वाली चीज है तो वो थर्ड ऑफिसर के प्रोफेशन में ज्यादा है and learning these like what you call requirements even when you go for second mates so they'll be asking in the orals भाई इसकी requirement क्या है how much life boys are required how much this are required you cannot keep everything here it's not possible frankly speaking it is not Yes, sir. possible suddenly if you ask me sir life boy कितनी required है 200 मीटर के जांच पे I'll be like भाई मेरे को नहीं पता मेरे को ये पता है कौन सी Yeah. बुक में मिल सकता है ठीक है Yeah. अब तुम सडनली आ जाओ कि सर ये हीविंग लाइन है इसकी टेंशन कितनी होनी चाहिए भाई मुझे नहीं Yeah. इसकी डायमीटर कितना होना चाहिए लाइफ बॉय की ग्रैप की डायमीटर कितना होना चाहिए लाइफ बोर्ड के अंदर बेसिक आई नो बट Yeah. वो भी जब मैं चीफ ऑफिसर बन जाऊंगा कल को इफ आई कैन फ्रैंकली स्पीक सी इट्स नॉट अ थिंग ऑफ शेम if you ask chief officers, sailing chief officers about a lot of requirements, they will not be able to answer because भैया उनको 5 साल हो गए थर्ड ऑफिसर में सेल करे हुए Exactly. तो काफी चीजें फेड आउट हो चुकी हैं बट yes they will be aware of where to refer which is a thing you should know we have plenty of books plenty of publications which are required to be on board on the bridge we should have signals book we should have ROR book we should have a lot of this radio signals book ALRS तो मुझे मालूम है कि भाई कौन सी बुक से कौन सी रेगुलेशन में मालूम पड़ेगा fine so this is the thing required so junior officer में you will be more understanding these regulations these requirements weekly checks monthly checks as per PMS planned monthly schedule so and same things you will be repeating as third officer the only difference will be between junior officer and the third officer will be you will be an independent watchkeeper as a third officer you will be taking a lot of decisions involving your department of LSAFFA by yourself. In junior officer, you will be not taking such decisions. You will be assisting third officer. And also during cargo watch, you will be independent watchkeeper of 6 hours in MSC and I think lot of companies. In lot of companies have cargo watchkeepers too that are third officer and second officer. So 6 on and 6 off. So as third officer, you will be keeping a cargo watch. So okay so also you will be the independent in charge for the aft station for mooring at arrival and departure station and during your drills your muster station you will be the in charge of one of the lifeboat Yes, sir.
normally in muster drills as the duties, if I tell you. So duty of third officer, normally 90% of the companies keep as third officer the in charge of one of the lifeboat, and the other lifeboat in charge is chief officer. Okay, sir. So these are the duties. Okay, sir. Thank you. So the next question is, what is the most dangerous operation that you think, in your opinion? Like enclosed space entry, mooring operations. What are the one with carrying the most risk and where safety is at most? See, all these operations I think involve some amount of risk, and these risks can be uh, neutralized if you take the equal amount of safety involved. So maybe it is enclosed space entry, maybe it is working aloft, maybe it is working overside. So yeah, but working overside as per the latest requirement is banned in lot of companies. You Yes, sir. cannot work overside while the ship is underway and using engine. So, but I think for me, you cannot like determine. Yeah, but yes, one thing I would say, I have never experienced. I have just watched videos and heard a lot of experiences, and I don't think this is. I'm not sure. See, I will not comment on this. So I'm not sure this is still practiced or not. That launching of a free fall lifeboat with all crew, all complement inside. Okay. So this, I think, lot of masters still do not promote or encourage, because there is even not free fall lifeboat, even enclosed lifeboat launching with full complement is the most dangerous operation. Okay, sir. तो विच यू सुनने में ऐसा लग रहा होगा यार ये कि इसमें कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक काम तो एनक्लोज स्पेस एंट्री या वर्किंग अलॉफ्ट या वर्किंग ओवरसाइड ये सब चीजें. बट actually, if you ever get a chance, because I have never been sailed with any of the masters who is encouraging or is pushing for launching a live boat. I have never seen free for live boat since my 6 ships as sailing in the container ships. But I have seen always enclosed live boat. So never seen a master pushing to launch the boat with full crew. So normally we use what you call this embarkation ladder. So that is the most dangerous operation, and most incidents have happened. It is very well said that lifeboat have taken lot of lives. More than that, it has saved. Yes, sir. I agree Yeah, with that. I have yeah, also heard the same thing, like lifeboat is called a death boat in many cases. absolutely. Yeah, And I agree with you, sir. Accidents occur when they are least expected to happen. Like everyone will be like lenient with it, and they'll just be in complacency. It won't happen, and then suddenly, damn, and accidents happen. yeah. Yes, sir. So the next question is, what all should cadet know before joining the ship for the first time? Like things like ROR and basics that he should know before joining the ship. What is expected out of him? Because when someone goes See, on the ship, he knows nothing about the ship. He doesn't know where the galley is, nothing, where the yeah. mess room is. Yeah. See, I think you can get some brief knowledge, but if I share my experience when I went first time on the ship, you will be like, I am into some bulbulai. I am lost because you don't understand lot of terms. Like when I was joining the ship, so I was in the car, and my first ship I boarded from Fremantle. No, no, my first ship was from Felixstowe, Yes, sir. London. So I went to Heathrow Airport directly from Delhi. I stay in Delhi. So from Heathrow to Felixstowe, and Felixstowe I boarded the ship. The ship was around 300 meter long. So I was in the car, and the car was like covering the whole length of the ship, and I was like, यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, खत्म कहाँ होगा जहाज. So and I was looking कि इस पे चढ़ना कैसे है. And then the person of the immigration told me just to go near the gangway and उधर से बोर्ड करो. So like gangway, अब ये क्या चीज है. So these are the things which happen, and which happen with lot of you, and lot of people see that. But as if you ask me, some basic knowledge of same similar as I told before, you should have some basic knowledge of knots.
Yes, sir. Little bit. The most used knot is the clove hitch, or Clue. these kind of knots. You should have basic idea. Reef knot, and the other one is I forgot. Uh, okay, so we'll discuss that later. So some kind of knots, little bit idea of terminology. What is the alleyway? What is the galley? What is the gangway? And what is Yes, port sir. side? What is starboard side? Of course, you have that knowledge. एक साल DNS में एंड ROR मैं नहीं बोलूंगा. ROR एक साल पीसी में भी उतनी समझ मतलब मुझे तो समझ नहीं आई थी सच बताऊं तो. I understand slowly more when I went on ship during my training period and further on during second exam. But yes, if you try to understand it during a PC, it is good. If not, no problem. So that's all I think. Little knowledge of almost all things. It is said that having little knowledge of different things is dangerous, but in some cases it is good. So थोड़ी थोड़ा सब कुछ मालूम हो तो वो पूरा हो जाएगा. It is said. I experienced that. Yes, sir. So actually, Abhi Agarwal just wants to show what's going on in IMI. So I'll just Okay. add him for a few minutes. Sure, Abhi sure. Agarwal, yeah. There's one question Abhishek here. Agarwal. uh, Yes, sir. Sachin Tiwari, when a cadet first time is going on ship, and then where will he get to know about all the safety? Acha. Yeah, I'll just note it down. Abhi Agarwal, you can go, like, just show what is going on. What's this? Oh, this is the reception they are sitting at. What chal rahi hai? मौज नहीं कह So रहा, पढ़ाई चल रही है एग्जाम के लिए. Known place. nice. Yeah, I remember the old beautiful days. Wow. Yes, sir. This is the reception. I've never been on a reception watch, you know. Like अभय भी शायद नहीं रहा होगा, but मैं नहीं कभी नहीं. नहीं रहा था. So Captain Sense, these welcome to the live. Good evening. so these days normal classes are going on. Yeah. I guess the normal Yes, classes, sir. offline classes are going on. Oh, often classes are going on. Okay. अभी अग्रवाल कौन से बैच है तुम्हारे वहाँ पे? सर यहाँ पे DNS 35 है और 34 है इस समय. 34 का तो STCW चलने वाला है, उनके एग्जाम्स Okay. ओवर हो गए हैं. 30 हम लोगों का 35 बैच है, तो हम लोगों के सेकंड इंटरनल हैं. Okay. Fine. Okay. चलो यार. Okay. MSc. चलो. Yeah. Up to I think last I visited it was 3 years back for some work. तो अब तो I think MSc ने बहुत बढ़िया कैंपस भी बना दिए. हाँ सर, काफी जी, इम्प्रूव सर. हो गया है. हम अच्छा लोग के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो गया. it was the first semester जो पहला 6 महीना था उसमें तो Yes, sir. कूलर भी नहीं था मतलब. और नहीं सर, अब मेरा तो ऑगस्ट का एसीज और एसीज वगैरह सब लग गए. हाँ, नो बिंदास हो गया अभी तो. चलो ठीक है. ओके. एक्चुअली MSc का वो जो क्रूज लाइन का क्रूज की ट्रेनिंग है ना, दैट्स या बीइंग कंडक्टेड देयर. क्रूज लाइन का पूरा बट नीचे से डेवलप हो गया है. किचन जो है, नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, वो पूरा किचन के लिए डेवलप हो गया है क्रूज लाइनर्स की ट्रेनिंग के लिए. ओके. वही जो MSc ट्रेनिंग हाँ. बिल्डिंग का जो है या. ग्राउंड फ्लोर. तो एंड उस बिल्डिंग IMI में जो जो कॉलेज का जो थर्ड फ्लोर है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू क्या हाउसकीपिंग और इस सब का पूरा क्लासरूम बना रखा है वहाँ. अच्छा Yeah. तो जो एमएससी की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में कैडेट्स भी रहते हैं मतलब डीएनएस. हाँ सर, सारे डीएनएस वाले वहीं पे रहते हैं अभी. अच्छा. नॉट लाइक दिस कि खाली एमएससी रह रहा है या खाली कोई एक नहीं कंपनी. सर, सारे सारे उधर पे. ओके. बट आई थिंक जब ये ज्यादा बड़ा होगा, जब वो होंगे, तो शायद सिर्फ एमएससी के उधर शिफ्ट रहेंगे. ओके. यस सर. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस अब सर. हाँ, तो उसका क्या, सचिन तिवारी का क्वेश्चन था सर कि हाँ बोलो. where should he learn about all the safety features and safety guidelines of the ship when a cadet goes on the ship for the first time? The safety guidelines will be more briefed by the chief officer. So like do not enter into enclosed space.
obviously you cannot enter into enclosed space alone. Any of the crew, not only a cadet. Always two persons should be entering enclosed space with one person standing at the entry gate with the communication with the bridge. So Yes, sir. we will be briefed more about lot of precautions, lot of guidelines, lot of things by the chief officer directly. Further, if you want to find out by yourself, so you most probably by chief officer, or you can go into lot of books like COSWEB, Code of Safe Working Practices. So that Yes, sir. includes lot of things for safety. It is a code, it is not a convention. So I'll not go into deep things because many of the parents are watching this. So I think it's a little big question, difference between a code and a convention. So leave that. So it's a code of safe working practices, COSWEB. So I think recently we get to know about COSWEB. So COSWEB say you can get to understand a lot of safety procedures, safety precautions to be followed prior any job concerned is done. And normally there's always a toolbox meeting on board which the chief officer undertakes for all the crew. Like morning 7 o'clock, normally all companies goes and comes discuss all the day jobs with the chief officer. Yes, That sir. chief officer gives him the jobs, makes him understand that these things should be done in that way. He signs all the permits for the welder. There is a hot work permit for bosun or any other person concerned. There is a working aloft permit if he is doing any job which is 2 meters above the ground level. Any job which is done working overside, if it is done now, it is not allowed in our company. So anything else if you are going into that, so you have to sign permits. So वो सब काम होता है. So these all comes into safety. So cadet is always there with the chief officer like his shadow. So he also Yes, sir. watches those things. He also makes him understand why is Sir, he doing Captain these kind Sense is of things. here. Good Well, हेलो move, गाइस, sir. इसीलिए मैं अपने मतलब जो है ना आईडी में नहीं आता, क्योंकि जैसे ही मैं आता हूँ लाइव का सारा मैं अच्छा भला चुपचाप देख रहा था. अब है या किसी की नजर चली गई तो Yes, सारा sir. मजा खराब हो गया. वो अच्छे से समझा रहा था यार. मालूम है अलग अलग व्यूअर्स का कंटेंट देखना चाहिए, बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू दिस थर्ड ऑफिसर एंड आई वाज लुकिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ चीजें मेरे को इसके थ्रू पता लग रही थी. अब तो मैं आ सर गया आप हूँ, मैं भी बोलता रहिए लाइव रहूंगा. में, आप भी ऐड करिए अपनी चीजें, सर भी अपने साथ सब शेयर करते रहेंगे. ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस पॉइंट में बोलूंगा, बट आई लेट थर्ड ऑफिसर फिनिश फर्स्ट. ही वाज ओके सर. राइट sir, राइट राइट. firstly, I am meeting you for the first time and I'm following from long time. और आपसे कभी लाइव करने का मौका नहीं मिला. It is very good to see you on board. एनी Good टाइम evening. ब्रदर, जस्ट ड्रॉप मी अ डीएम. मैं तो रेगुलरली करता रहता हूँ, कभी कभी कोई ना कोई जी लाइव. जी, I am तो always asking फील फ्री everything. एनी टाइम. अभय के साथ अब आज अभय ने इनिशिएटिव लिया है, तो डेफिनेटली जब ये लाइव शेयर हो जाएगा तो आई विल शेयर इट ऑन द. बट दिस Yes, इज sir. ओनली वन टाइम. यहाँ के आगे की जर्नी तुमको खुद करनी पड़ेगी. हाँ But I'm सर, happy श्योर to सर. see that you have taken this initiative, you have completed your pre-C, and you are sharing the baton and your knowledge with fellow seafarers. And it's good you are doing it with a young man, because that gives a different perspective, पता है? And people will be more open to ask him than asking somebody like me. Chalo, carry on. I'll wrap up once he finishes. Okay, so I was discussing. I think almost I finished whatever they were asking. They were asking me about what all the safety things the cadet can get to know once he boarded the ship for the first time as his first contract. So I almost completed. You can add, sir, please. I think whatever the third officer said is pretty much in line, because with the change of generation, there is a change in curriculum as well. पहले ECDIS नहीं था मेरे time, so we started with paper charts and all. So your preparation that time was little different, but it's still in the same line. But what I'll recommend you is only one thing different from third. It is know your boys. Boys are very important. Reason being, when you will be a lookout on approaches, you will see a boy. You don't have to recite a theoretical answer to it, but knowing the boy will give you a very visual understanding of what you see and what you see, like in and out both. So you will be very well connected. The mental picture and the picture which you see on the chart, you will see how beautifully it will connect. Secondly, I'll emphasize a lot that remember, you guys are joining either as an engineer or as a deck cadet. आपको like just like when you sit inside your car, you need to know the dashboards. हम लोग वार्निंग सिग्नल कहाँ से ऑन करते हैं, जैक कैसे लगाना है, बिकॉज ये सब चीजें ऐसी हैं, कब जरूरत पड़ जाए उसका पता नहीं है. Yes, sir. हो सकता है आपकी गाड़ी में कभी पंक्चर नहीं हुआ सालों से, पर एक बार हो जाए, तो हमें नहीं पता. हमारी पहली वॉच पे, मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम थर्ड ऑफिसर हूँ, पहली प्रेशर है वॉच का, या फर्स्ट टाइम कैडेट हूँ, लुकआउट पे कैप्टन ने ऊपर बुला लिया कि ठीक है
इंजन मूवमेंट वगैरह या आप लुकआउट में असिस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसी समय स्टीयरिंग फेलियर हो गया, वो तो बता के नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा चीजें हमें टेक ओवर के टाइम पे भी इस चीज पे स्ट्रेस देना चाहिए, जो चेकलिस्ट में लिखा है ना, हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो फैमिलाइजेशन चेकलिस्ट है ना, बस उसको डिलीजेंटली हमको कवर करना है। यू विल सी एवरीथिंग विल बी कवर्ड वेरी सिस्टमेटिकली। पर अपने ब्रिज पे Yes, हमें sir. दो चीज हमेशा पता होनी चाहिए, जितने भी इमरजेंसी स्टॉप्स हैं किसी भी चीज का, वो स्टीयरिंग चेंज ओवर प्रोसीजर्स बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपने वॉच टेक ओवर करी, तुरंत इमरजेंसी स्टीयरिंग फेलियर हो गया एंड Yes, sir. डिपार्चर यूजुअली ड्यूटी ऑफिसर इज इनसाइड द ब्रिज, तो वो पहला एक्शन लेगा चेंजिंग ओवर, तो पैनिक नहीं हो गया। पर तीसरी चीज, जहाज हर कोई घुमा सकता है, किसी भी रैंक पे घुमा सकते हैं, क्योंकि हेल्प नहीं देना है ना, बाकी इंजन चल Yes, रहा sir. है। बट अगर आपको आपके जहाज का टर्निंग सर्कल, ट्रांसफर और टेक्टिकल डायमीटर पता है इन शैलो वाटर्स एज वेल एज इन ओपन सी, देन वो कंट्रोल टर्न होगा। जब आपने गाड़ी नई नई सीखी थी तब भी आप घुमा रहे थे, अभी भी घुमा रहे हो, बट डिफरेंस है। Yes, sir. और तीसरी चीज, अगर यू कैन गेट एक्सेस टू द कंपनी एसएमएस, तो उसमें वर्क परमिट्स ध्यान से देख लो। रीजन बिंग दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन फॉर योर ओन सेफ्टी। और दूसरा चीज, नेविगेशन पॉलिसीज कंपनी की थोड़ी सी देख लो, तो आपको बहुत सी चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी कि ये मुझे क्यों करना है, ये एंट्री मैंने क्यों करी, या ये ऐसा मैंने क्यों करा, मैंने साउंडिंग क्यों ली दिन और रात। एंड ट्राई टू लर्न पैसिवली। मतलब अगर मान लो थर्ड ऑफिसर और चीफ ऑफिसर बात कर रहे हैं, तो आज जो काम वो कर रहा है या वो डिस्कस कर रहा है, वही हमें करना है कल। तो वो पैसिव Yes, लर्निंग में sir. हमेशा कान खुले रख के सुनोगे ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। थर्ड मेट सेकंड मेट को हैंड ओवर कर रहा है, वही तो हैंड ओवर हम करेंगे। तो पैसिव लर्निंग में Exactly, हमेशा sir. मतलब जनरली हम लोग स्विच ऑफ हो जाते हैं कि ठीक है ये तो बंदे बात कर रहे हैं, तो उनको जरूर सुनो। क्योंकि जनरली थर्ड ऑफिसर जब भी सुबह 8 बजे चीफ ऑफिसर को मिलेगा, तो वो अपना वो काम डिस्कस करेगा, वेदर डिस्कस करेगा, और उसमें वो बहुत सी चीजें, जैसे अभी सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम ब्रदर, उसमें भी आपका ऑफिशियल आईडी है, व्हाट्स योर गुड नेम? You're asking me, sir? हाँ हाँ, My name is Abhishek Gupta. अब मान लो अभिषेक और मैं बात कर रहे हैं, अभिषेक बोल रहा है सर आज मैं लाइव बोट पे जा रहा हूँ, तो मैंने परमिट साइन कर लिया। तो तुम्हें पता है कि लाइव बोट में आज अकेला जा रहा है या रेस्क्यू बोट में जा रहा है, तो परमिट पहन के जा रहा है। मैं बोलूंगा अच्छा रेस्क्यू तुम्हारा हार्नेस वगैरह है ना यार, तो कहेगा हाँ सर हार्नेस है, बट आई नीड वन गाय टू कीप अ लुकआउट। तो हम मेंटली कहीं ना कहीं इस चीज को एब्जॉर्व कर रहे हैं, वरना इसी चीज का क्वेश्चन मुझे अलग से जाके पूछना पड़ेगा कि अच्छा सर आप मुझे बता दीजिए रेस्क्यू बोट में क्या क्या चेक कर। तो जब भी मौका मिले थर्ड ऑफिसर के साथ मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करो। इवनिंग वॉचेज में, मॉर्निंग वॉचेज में जनरली टाइम नहीं मिल पाएगा, और इवनिंग वॉचेज में कोशिश करो कि उसके साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा नहीं, बिकॉज अगर आप ओवरबोर्ड करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। बिकॉज जूनियर रैंक्स कैडेट्स फिजिकल वर्क में भी इन्वॉल्व रहती हैं, आप आगे पीछे कर दो, डेक में थक जाओगे, ब्रेक लेने जरूरी है। जब आप सोने जा रहे हो तो वॉच अ मूवी, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, लर्न टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्क। दिन में पूरा लगा दो, भागो दौड़ो, जो करना है Yes, करो। sir. शाम को एक बार कैबिन में आ गए, दैट मीन्स ऑफ भाई, खत्म। दैट टाइम इज माई टाइम। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये Oh, एक डीप हाइजीन नाम की चीज होती है। जस्ट बिकॉज यू आर अवेयर कि सामने वाला बंदा जाग रहा है, दैट डजंट मीन इज अवेलेबल फॉर यू। इन द सेंस के मान लो मुझे पता है कि अभय अभी कैबिन में गया पर जाग रहा है, बट वी मस्ट रिमेंबर कि yes, अभय sir. कैबिन में है बट नाउ ही इज इन हिज फ्री टाइम। तो वो हमें कॉल करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कॉल मालूम है हमेशा रिश्ते खराब कर देगा। दोस्ती यारी में चलता है, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट कि अगर तुम्हें पता है थोड़ा सा अभी 6 बजे डेस्क से गया है, 5 बजे डेस्क से गया है, देन डोंट कॉल हिम। या तुम्हें पता है अभी Yes, भी sir. ड्यूटी इंजीनियर अभी नॉक ऑफ कर रहा है, अभी मत कॉल करो कि सर वो कल मेरे को ये दे देना। तो वो थोड़ा Yes, सा sir. बैलेंस रखो, और अपना ऑफ टाइम में अपना मूवी देखो, रिलैक्स करो, डोंट थिंक अबाउट इट, देन टॉक टू योर फैमिली, मजे करो। बट अगर उस करने से पहले अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट निकाल के सिर्फ घड़ी बांध लो, ज्यादा नहीं करना कि लग गए 1-1 घंटा, क्योंकि उसमें आप क्या होगा 4-5 दिन में फ्लैट हो जाओगे। सिर्फ 20 मिनट घड़ी से देख के, पर डिलीजेंटली, गुड इवनिंग सर, सर आज क्या कराने वाले हैं, Yes, और sir. एक एक इक्विपमेंट उसके साथ पकड़ते चले जाओ, क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से तुम्हें थोड़ा सा सिखा सकता है, बिकॉज हम उम्र है, और Yes, एक sir. पहली हो जाता है तुरंत। चीफ ऑफिसर के साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है, पर थोड़े टाइम में उसके साथ भी पहली हो जाएगा, जब आप वो देखेगा कि थर्ड ऑफिसर के साथ रुक रहा है। प्लस शिप पे बहुत अच्छा इंप्रेशन है, कैप्टन आता है 8 बजे नाइट ऑर्डर देखने, वो कहेगा यार अच्छा कैडेट यहाँ पे सीख रहा है। बट 8:15 8:20 तक निकल जाओ, रीजन भी उसके बाद वो स्लीप हाइजीन है हमारा, हमें हमारा ब्रेक चाहिए, हमें मूवी देखना है, गर्लफ्रेंड है, फैमिली है, जो भी करना है। तो और टाइम पे कम से कम 6 घंटे का कोशिश करो कि रात में 6-6.5 घंटे से कम मत सो। रीजन भी Yes, sir. नेक्स्ट डे यू विल नॉट बी 100%। बस मैं यही कहूंगा। बाकी ये अगर कंपनी एसएमएस पढ़ सकते हो शिप पे रह के, तो कोशिश करो एक एक पढ़ो। यू विल रियलाइज कि उसमें इतना वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कि आप उसको पढ़ने का दिखाओगे कि यार मैं कैसे आ गया, मतलब मैंने कैसे, मतलब हाउ वाज आई सर्वाइविंग दिस लॉन्ग।
So that will be Yes, my sir. only advice. I think you should continue the life with third officer. Reason being, there is a different perspective. If you ask my perspective, वो same आएगा जो मैं बाकी सब lives पे कर चुका हूँ. So I'll stay back for a question. I'll let him answer and then I'll take a leave. Sure, But sir. anytime you guys are interested in doing a live or you want to share a live, feel free. I'll be most happy to Thank you guys. so much, sir. Thank you so हमारे का much. शायद पैरा लाइव है. Yes, yes, sir. It's officially parallel. I hope others follow the same trajectory and I think information for free is nothing like it. आज बहुत खुश हूँ देख करके. I guess कि ऐसे Thank you, sir. लाइव और आएंगे तो I think it is a very good message to the industry and you are doing it for free. Yes, sir. Surely they will come and proper planning के साथ और भी करते रहेंगे सब. Definitely बहुत अच्छा content बनेगा. चलो next question and then we'll take a leave. Third officer will answer and I will just add to it once he concludes. Okay, sir. So there was this question by Masroof that what happens if like a senior officer, like chief officer, you are on deck and you are entering a enclosed space entry, and he just says कि like he is a little in complacency कि work permit बाद में sign हो जाएगा and let's just do the work first. इतना सही तो काम है and then let's do it. So what should you do then? Because he's your senior, he knows better than you, but you from as a human being, you know that's not safe and it's not safe for you. So what should be नहीं, your action? मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन समझा नहीं. मतलब मैं एंक्लोज स्पेस के अंदर हूँ या चीफ ऑफिसर अंदर है? नहीं सर, जैसे कि आपको जाना है, जैसे मैं कैडेट हूँ, थर्ड ऑफिसर है, हमें एनक्लोज Okay. स्पेस में जाना है, हम उसके साथ रहते हैं चीफ ऑफिसर के साथ. और चीफ ठीक ऑफिसर है. इज सेइंग कि वर्क परमिट वगैरह ये बाद में देख लेंगे, अच्छा. छोटा सा काम है, लाइक कुछ पाइप गिर गया है, ठीक कुछ है. ऐसे अंदर हो गया है, यू ठीक जस्ट है. नीड टू गो एंड पिक इट अप. सो व्हाट शुड वी डू? लाइक वी शुड जस्ट डू व्हाटएवर वी कैन एंड गो, या फिर पहले उनको व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप दैट वी शुड टेक? तो मतलब चीफ ऑफिसर इज आस्किंग मी एंड कैरेट टू गो इनटू एनक्लोज स्पेस एंड बाद में परमिट पेपर वर्क बाद में कर लेंगे. मतलब परमिट वगैरह छोटा ही काम है, लाइक ठीक पाइप है. नीचे थोड़ा स्लाइड हो गया, उसको ऊपर लेके आना है, यू जस्ट नीड टू एंटर द एनक्लोज स्पेस एंट्री. So I will say it's fine. I'll prepare the permit. You carry on with your job. I'll prepare the permit. I know how to prepare. मैं परमिट Yes, बना sir. के लाता हूँ, कागज आपको दिखाता हूँ, आप देखो ठीक है, आप साइन करो, मैं साइन करता हूँ, कैप्टन साइन करे, मैं जाता हूँ. साइन तो कर ही सकते हो आप, Yes, फाइल sir. उठा लो. सर बट लाइक इसमें चेकलिस्ट होती है, सो वो सब फॉलो नहीं हो रही है एंड नहीं तो उसका क्या करना? फॉलो करूंगा ना. मैं परमिट बना रहा हूँ, जितने पॉइंट्स हैं आई विल फॉलो. आई विल टेक बोसन और वट एवर एनी अदर पर्सन. चीफ ऑफिसर बिजी है ना, पूरा जहाज थोड़ी बिजी है. सर मैं एक बंदा ले रहा हूँ, बता दो किसको लेना है. आप नहीं बता सकते, बोसन बता देगा. फलाने बंदे को मैं एंट्री पे रखता हूँ, ऊपर ब्रिज पे वॉच कीपर है, उससे वो कम्युनिकेशन करेगा. वॉकी टॉकी सबके पास है. अंदर एटमॉस्फेयर चेक कर लेता हूँ, सारे काम मैं कर लेता हूँ जो भी करने हैं. परमिट में आपको लिख के दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ. कुछ गलत मैं बता रहा हूँ तो आप एड ऑन कर दो. परमिट मैं बना Okay, देता sir. हूँ, आप चेक कर लो परमिट सही है कि नहीं है और आप साइन कर दो. तो आपकी जॉब Okay. मैंने कर ली और जॉब Yes, तो sir. करूंगा. अब आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, देन विल पोस्टपोन दिस जॉब इफ इट इज नॉट सो Okay, sir. अर्जेंट एज पर चीफ ऑफिसर, बिकॉज ही विल डिसाइड कि वो जॉब अर्जेंट है कि नहीं है. अगर वो उसके Yes, काम sir. से ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो वो अपना काम कर ले, जो ये जॉब है बाद में करेंगे, Okay, sir. बट नॉट विदाउट द परमिट. Okay, sir. Captain Tarun, your opinion on this? I'll tell you why you should not agree. Reason being, एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका और दूसरी चीज है कि कल्चर एंड प्रैक्टिस डिसाइड्स हैबिट. एक बार तेरे को पता लग गया, नीचे जाके ऊपर आ सकता हूँ, Then habit हो जाएगी and yeah. दैट इज नंबर वन. It won't stop you. ठीक है ना वो. और कैडेटशिप में जो हमारी एक जैसे बोलते हैं ना, एक यंग माइंड, एक इम्प्रेशनेबल माइंड होता है. Yes, sir. Whether you like it or not, every cadet, every third mate and every second mate and every chief mate is a derivative of the commands he has sailed with or chief officers he has sailed with. Like it or not. तुम उनका डायरेक्ट कॉपी करने लगोगे, तुम उनकी प्रैक्टिसेस कॉपी करने लगोगे. जब तुम सेल करोगे तुम रियलाइज करोगे, एट टाइम्स यू विल हेट इट, बट तुम रियलाइज करोगे तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट बनता जा रहा है. बिकॉज बहुत इंप्रेशनेबल माइंड होता है, बिकॉज यू लुक अपॉन देम ना. When you get in trouble, you usually call a senior officer. When you get in trouble, तो तुम किसके पास जाओगे? थर्ड ऑफिसर के पास जाओगे. सारी गलती हो गई तो you see how he will fix. So that becomes your practice career. थर्ड ऑफिसर ऐसे चलता हुआ आया तो ऐसे हाथ मारा और ठीक हो गया. Yes, sir. So you start attaining their mannerism. That's number one. Number two, now how to handle this situation. Remember, आपने कभी गाय का दूध निकाला है? किसी के घर में भैंस रही है, फार्म में भैंस है किसी के, सर देखा हुआ है, मतलब देखा है. you never ever see. गाय तो दूध दे रही है, हमें पीना है. Yes, sir. कल को you will be future masters, you will be future chief engineers. You can have a
very pushy chief officer, you can have a very demanding third mates. How will you handle him? Because every time if you say कि कर मैं बोल रहा हूँ, तो वैसे तो नहीं चल पाएगा ना टीम में, क्योंकि कई बार हो सकता है सही पॉइंट बोल रहा हो, तुमने ओवर रूल कर दिया, तुम्हारे खुद के लग गए, तो उस केस में तो और मर गए, बिकॉज सामने वाला तो बोल देगा मैंने बताया इसने सुना नहीं मेरा, तो मतलब एक तो गड्ढा खोदा ऊपर से मिट्टी भी डाल दी. तो learn to milk the cow, because politely even the master says no to owners and charterers, chief officer says no to the master, sometimes to chief engineer. So politely करना है, बोलो सर मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा, और इसीलिए मैं परमिट बना के लेके आ रहा हूँ 5 मिनट में, क्योंकि मुझे कुछ हुआ तो मुझे पता है आप पीछे आओगे सर, और आपको कुछ हो गया तो मैं नहीं रुक पाऊंगा सर. तो सर आपके लिए, मेरा कुछ नहीं है सर, आपके लिए आपको नहीं जाने दूंगा सर, गुरु माना है आपको मैंने, गुरु के साथ सर मेरी वफादारी है. तो आपने काम भी कर लिया, लाठी भी तोड़ दी, सांप भी मार दिया. अगर उसके बाद भी बोलता है कोई गुरु गुरु नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूं तुम जाओ, तो नाउ ही हैज एस्केलेटेड इट टू स्टेप 2. ठीक है ना, कि नहीं नहीं तेरे को बोल रहा हूँ ना, क्या मेरा वेरा नहीं, तू जाके लेके ना सामने पड़ा हुआ है मेरे, यस सर, तुमको बोलिए. तो फिर आप थोड़ा सा फॉर्मली उसको एस्केलेट कर सकते हो कि देखिए सर मेरी तो देख के फट जाती है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को. यस सर, परमिट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, सर 2 मिनट में बना के ले आता हूँ, 2 मिनट रुके सर, अच्छा मैं रुक जाता हूँ 5 मिनट, उसके बाद जो काम है मैं करके आ जाऊंगा. समझ रहे हो ना. अभी भी बोला अरे तू कौन होता है बोलने वाला, तेरे को मैं बोल रहा हूँ ना फंडे क्या दे रहा है, तू नीचे जा. देन कम्स द थर्ड स्टेज वेयर यू हैव टू पुट द फुट डाउन, कि सर वेरी रेस्पेक्टफुली you happen to be a chief officer and I happen to be a cadet. You take care of my well-being, but I have to take care of your well-being as well. Neither I will go or nor I will allow you to go, sir. यस सर. And that's it. उसके बाद वर्स क्या होगा, वो तुम्हारी रिपोर्ट में कल को लिख देगा ही इज नॉट कोऑपरेटिव. तो ऐसी रिपोर्ट लेके क्या करोगे, क्योंकि कल को ऐसा ही चीफ ऑफिसर तू बनेगा जो किसी और के प्रेशर में अलाउ करेगा. कल को उससे भी पुअर मास्टर बनेगा. रीजन बीइंग when you are a cadet you are dealing with chief officer and masters alone, correct? Yes sir. At the most third mate, second mate or fellow engineers. But when you become a chief mate you are dealing with PSCs, fellow chief engineer, fellow second engineers, PSC, master, third party auditors. What are you going to do? Always look for a shortcut ताकि तेरी रिपोर्ट ना खराब हो जाए. और ये बात याद रखना, रैंक की मजबूरी आज से चालू होगी और जब तक सेल करेगा या जो कहीं भी रहेगा वो हमेशा रहेगी. क्यों? थर्ड कैडेट में आई एम जस्ट अ कैडेट यार, मैं क्या कर सकता हूँ. थर्ड मिनट में तू कहेगा यार मैं तो अभी पहली बार ज्वाइन आया हूँ, अपनी बचाऊं या सामने वाले की बचाऊं. सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में तू कहेगा यार मैं तो प्रमोशन के लिए डी हूँ, अब पंगे कर लिए तो मेरा प्रमोशन चला जाएगा. अभी सेकंड मिनट बन गया तो बोलेगा यार मैं पहला कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ, यहाँ एग्जिस्ट सारा मास्टर के भरोसे भाई मैं करता हूँ, मैं किससे झगड़ा करूंगा. चीफ ऑफिसर बनना नहीं देखो, चीफ ऑफिसर तू बनते ही कहेगा कि भैया मैं पहले टाइम चीफ ऑफिसर, पूरा जहाज मेरे सर के ऊपर, भाई मैं अपनी नहीं बचा रहा, किसी और की क्या बचाऊं. और उसके बाद यही स्टोरी मास्टर में बनेगी. मास्टर में तो कहेगा यार ओनर्स से कहा मैं पंगा लूंगा, मुझे निकाल देंगे, जहाज ही नहीं देंगे. बट एवरी ओनर, एवरी पर्सन सीज योर पर्सनैलिटी एंड दे सी हाउ यू रेजिस्ट, एंड वे यू रेजिस्ट डिसाइड्स हाउ फार यू विल गो इन दिस करियर. पॉजिटिव रेजिस्टेंस एंड प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ एवरी सिचुएशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. हम लोग बोलते हैं ना कि यार वो मास्टर बहुत पैनिक मास्टर रह रहा है, वो डिपार्चर पे बहुत चीखम चिल्ली करता है, क्या गलत है? यस सर. बट स्टेशन करने में बहुत मजा आता है, या ऐसे इंस्ट्रक्टर्स के साथ बहुत मजा आता है जो आपके लेवल पे आके समझाते हैं कि अरे अबे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं यार मैं दोबारा समझाता हूँ. तो हमें उस लेवल पे आके या तो उसको लेवल पे लेके आना या उसके लेवल पे आके, बट रिमेंबर वी मस्ट नो हाउ टू मिल्क अ काउ एट एनी पोजिशन ऑन द शिप, वेदर यू आर एज अ क्रू और यू आर अ थर्ड मेट. रीजन बीइंग 22 लोगों से ही काम कराना है. अगर उसको सैलरी दिया तो दूसरा वाला उससे भी खराब आ गया, फिर क्या करेगा? फिर तो और फंस गया. एंड रिमेंबर जब भी कोई तेरे को इनपुट दे रहा है वो इनपुट ले लेने का. रीजन भी उसको लेने में कोई नुकसान नहीं है, बट एक बार तुमने उसको रोक दिया तो कभी हो नहीं पाएगा. और हमेशा जब भी तुम ब्रिज पे जा रहे हो ना, तो कभी किसी का आंसर को फाइनल मत ले. जैसे तूने थर्ड ऑफिसर से जाके पूछा कि सर हम यहाँ एंकर कहाँ डालेंगे, थर्ड ऑफिसर ने बोला यहाँ डालेंगे. कभी ये मत होने दे, तू ये बोल के सर यहाँ डाल सकते हैं क्या, क्योंकि जब तू वहां डालेगा तो तेरे से पूछेगा क्यों, तो तू सोचना चालू कर देगा. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टू थिंक, योर कन्वर्सेशन रादर देन टीचिंग बिकम्स अ डिस्कशन. कह रहे भाई तूने यहाँ क्यों बोला, अरे सर थोड़ा डिस्टेंस क्लियर है, उस जहाज से दूर हूँ. तो थर्ड ऑफिसर का भी अचानक से क्या एक ब्रेन में इंटरेस्ट आ जाएगा, अरे पर लाले जहाज की डेप्थ भी तो देख, अरे सर डेप्थ तो है बट हम यहाँ थोड़ा शेल्टर्ड भी हैं. So rather than becoming a third mate, second mate relationship, it will become a colleague relationship.
तो वो आइस ब्रेक करनी पड़ेगी दोनों बंदों को। और जहां तक की बात है परमिट की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ परमिट्स को कभी वायलेट मत करना। रीजन भी वो एक आदत पड़ गई ना सेफ्टी कल्चर ना अडॉप्ट करने की, यू विल ऑलवेज फाइंड दीज थिंग्स यूजलेस। एंड रिमेंबर, कभी उस परमिट को जब तुम ये काम अगर कर लो, कभी रात में आके आंख बंद करके सोचना आज हाँ मैं गया था और जिस परमिट को मैंने नहीं साइन करा, तो रूह तुम्हारी कांप जाएगी। आज जब मैं सोचता हूँ जो मैं हरकतें कैडेटशिप में थर्ड मिनट में कर लेता था, इधर से उधर कूद गया, कहीं भी पटक के लटक गया, आज अगर चीफ ऑफिसर या मास्टर में सोचता हूँ तो मेरे मतलब टांग कांप जाती हैं। रिमेंबर, इस समय बहुत यंग एज है, तो यू विल योर थ्रेशोल्ड रिस्क इज वेरी वेरी हाई एंड चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज हमें थ्रेट नहीं पता कहां से आएगा। जैसे अगर थर्ड ऑफिसर है, ये शिप पे सेल कर, इसको पता है शिप कहाँ टकरा सकता है। तुम अगर इसको हेलमेट के बिना भी भेज दोगे ना, तो ये अपने आप ऐसे डक करेगा, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ मेरा लगेगा, यहाँ मैं निकल जाऊंगा, यहाँ इतना झुकना है। बट हम लोग क्या आएंगे, जोश में आएंगे, ठक करके टकराएंगे, गिर जाएंगे। नहीं, इस पे हेलमेट के इतने इंसिडेंट हुए हैं कि कैडेटशिप में एक कई बार हेलमेट बजा है और ऐसा लगा कि भैया आज हेलमेट ना होता ना तो ये नारियल फट के बाहर आ क्रॉस डेक जाता। में, हाँ क्रॉस डेक में बहुत होता है, मेरा भी निकल के टकराएगा और मैं बोलता हूँ थैंक गॉड भाई ये सर पे है। तो सेफ्टी इज पैरामाउंट। रिमेंबर, आजकल इंडस्ट्री में इंजरी और इससे बड़ा कुछ नहीं है, और तुम्हारे करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को चोट लग गया तो उस कल्चर में एक बार फंस गए कि यार 5 मिनट लगते हैं सिर्फ परमिट भरने में, कभी बिना परमिट के और चेक्स के काम मत करना। रीजन बीइंग यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क। टुमारो एज अ टीम लीडर you will put your entire team at risk. Remember, you will tomorrow be sailing with as a third mate, as a second mate. एक टीम होगी तेरी को जिसको तू यही करने के लिए बोलेगा, अरे भाई कर देना 5 मिनट का रस्सी है। एक एग्जांपल के साथ मैं खत्म करूंगा। एक एवी था, अंदर आया, मैं करता तो मैंने उसको बोला, अरे मेलविन जस्ट गेट मी द साउंडिंग ऑफ ऑफ पीक टैंक इज जस्ट अबाउट टू टॉप यार, आई जस्ट वांट टू वेरीफाई, टॉप अप करना था टैंक। तो मैंने कहा चलो मैक्सिमम जितना ले सकते हैं लेंगे। 5-10 मिनट हो गए। हाफ पिक टैंक तो मतलब आदमी पीछे से क्रू मैशरूम वगैरह जो होता है खुलते पीछे पाइप रहता है, फटाफट 5 मिनट में 10 मिनट बाद मेरा पारा गर्म होने लगा। वॉकी टॉकी था नहीं क्योंकि वॉच खत्म हो गई थी उसकी। तो फाइनली मैं जो ना बड़े गुस्से में बाहर निकला। तो जैसे ही मैं निकला बाहर, वो अंदर आ रहा था, तो देखा पूरा यूनिफॉर्म, मतलब पूरा उसने अपना गियर पहना हुआ था, क्योंकि जब वो निकल रहा था से तो वो अपने लॉन्ग जॉन्स और टी शर्ट में था। तो मैंने कहा वेल it was just right behind, there was like yeah, no chief, it is a habit, once spoiled then always spoiled. Yes sir. वो मतलब मुझे इतना छोटा फील करा गया। मैंने कहा शिट यार। कहता चीफ सॉरी टू सर इसमें लाइव में टाइमर आ रहा है, चलो so I think it's going to end. Yeah, you can restart again and save the live. I will share it and all the best. Continue with third officer. I'll watch it. I'll be there till the end. Thank you so much, sir. Thank you. All the best, guys. I'll continue the live. Bye. Take care. Yeah, welcome back, sir. Yep. Yeah, welcome back, sir. वो 1 hour का टाइमर एक्चुअली ऑफ नहीं किया था मैंने उसमें। अच्छा कोई नहीं, मैंने लाइव शुरू करा है, मैंने भी ऐसे ही किया, कोई नहीं सर। सर एक और क्वेश्चन था, दिस इज अबाउट ये जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है इतना सारा, इसके अंदर जस्टिस फॉर मलिक करके ये जो चल रहा है सर, आइडिया ना सर। कल कैप्टन ने भी इसके ऊपर लाइव किया था, काफी डिस्कशन हुआ था। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये काफी पता नहीं क्वेश्चंस के अंदर आए थे। सर दिस इज फॉर अभिषेक सर, डिड यू एवर हैड अ बैड एक्सपीरियंसेस एनी ऑफ योर सीनियर्स, लाइक वो कुछ ऐसे फालतू में आपको बुली कर रहे हैं या फिर कुछ, एंड हाउ डिड यू हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो उस टाइम डेवलप हो रही थी? देखो, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने ज्यादा जहाज नहीं करे हैं, तो अगर मैं बोलूंगा तो जो बंदा मुझे फॉलो करता है, ठीक है, वो समझ जाएगा उसके बारे में बोला जा रहा है। एनीवेज, आई डोंट केयर अबाउट दैट, दैट्स नॉट एन इशू। yes, I sailed with one of that kind of master, so but it was not like वो मुझे, मैं हमेशा बोलता हूँ, और इवन उस मास्टर को when I signed off, I told him, sir, to be honest, आपने बजाई तो बहुत पर सीखा बहुत, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसने सिखाया नहीं, उसने बहुत सिखाया, बट वो तरीका थोड़ा लीनियंट भी हो सकता था। जिस तरीके से सिखाया वो उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं थी, शायद थोड़ा मॉडरेट लेवल पे भी सिखाता तो भी इंसान सीखता। इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप एज थर्ड ऑफिसर, तो
Like he used to normally since we have almost all companies have कि भाई पेपर वर्क नहीं करना है वॉच कीपिंग आवर्स में, तो MSC इज अ ओनरशिप कंपनी, तो पेपर जॉब बहुत होता है. इफ यू आर नेविगेटिंग इन चाइनीज पोर्ट्स, तो कोविड के टाइम पे बहुत पेपर वर्क था, ट्रिमेंडस. Yes, कोविड sir. के Abhishek, sir, you're not audible actually. यार मेरे को लगता है मेरे ईयरफोन की चार्जिंग खत्म बैक हो. बैक Ask him now. आ You're गया. audible. Yes, sir. Now you are ओके, back, sir. ठीक है. तो ही यूज टू लाइक टेल मी के ब्रिशल पेपर वर्क करना नहीं. आई सेड ऑफ कोर्स नहीं करना, बिल्कुल नहीं करूंगा. तो 1 से 3 मुझे तुम डेस्क पे चाहिए रोज. नाउ माय क्वेश्चन वाज, सर इतना कौन सा काम है कि मुझे रोज डेस्क पे जाना है? पेपर sir. वर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट. इफ मैं पेपर वर्क नहीं करूंगा तो आप कर लो. how would I prepare the arrival papers, pre-arrival papers? We are doing at least 20 ports in a month. We are having maximum sailing of 3 days. पेपर वर्क भी n नंबर ऑफ पेपर जॉब्स है मेरे पास. और अगर तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ डेक का, तो आप मुझे पता. तो what he used to do, he used to find out things which are not actually required. He used to tell me लाइव बुक क्लीन कर दो twice a week. Not required. 3 बार हफ्ते में लाइव बुक क्लीन करके उसमें सोना तो नहीं है ना हमने. So these kind of jobs, like sometimes I used to argue, sometimes chief officer used to fight for me because he also knew chief officer कि भाई these kind of tasks are not actually required. Why are you up to those tasks? So he used to wake me up at 6. I'm telling you my schedule for the first 2 months because it was my first shift, so I also did not have lot of things to contradict his jobs. कि भाई मैं contradict Yes, करूँ sir. उसको कि सर आप मैं ये नहीं करता, जाओ. क्यों नहीं करते? अब कैसे बोलूं कि आप गलत हो, किस तरीके से? तो आई वॉज नॉट इन दैट पोजिशन. तो 2 महीने माई शेड्यूल वॉज मॉर्निंग 6 o'clock और 6:30 ही विल वेक मी अप. नॉर्मली थर्ड ऑफिसर वॉच इज 8 to 12 मॉर्निंग, 8 to 12 इवनिंग. तो 6:30 बजे Yes, सुबह sir. मुझे उठा देगा कि 6:30 से 8 अपना पेपर वर्क करो. तो 6:30 से 8 में अपना पेपर वर्क करूंगा. 8 से 12 अपना वॉच करूंगा. और फिर वॉच करते लंच करते फटाफट अपना मैं डेस्क पे चला जाऊँ, क्योंकि ही यूज्ड टू गिव मी एवरी डे लिस्ट कि मुझे ये काम चाहिए. तो करते करते मुझे 5 बज जाएंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, वो सारे काम ऐसे नहीं है कि कुछ बहुत अर्जेंट. शिप पे जॉब्स आर नेवर एंडिंग. यू एंड इट वाज 30-year-old ship. You cannot make a 30-year-old Yes, ship sir. into a yard delivery. नया जहाज नहीं बना सकते तुम उसको. So I used to keep doing those jobs and it used to take 4 or 4:30. And फिर in MSC, I don't know about other companies, the third officer goes to relieve the chief officer for dinner. तो 6 बजे मैं खाने के लिए जाऊंगा and he will take chief officer with him. Captain will take and somehow in their conversation they will make it 7. 7 बजे chief officer आएगा. अब 7 बजे chief officer आया, मैं 6 से 7 ब्रेक करूँ. मैं 7 बजे कमरे में जाऊंगा, खाना खाऊंगा. 8 से 12 मेरा फिर वॉच है. तो बेसिकली मॉर्निंग 6 to night 12 I am on and I am Yes, sleeping in 24 hours for 6 hours. So this was a bad experience. So but I will say it was very tough. Like I was at a point कि भैया मैं शिपिंग छोड़ रहा हूँ. मेरे शिपिंग शायद मेरे लिए नहीं बना या मैं शिपिंग के लिए नहीं बना. So I will quit shipping. So discussing on first time. So it was a tough time, but somehow I struggled and I got empowerment from chief officer. He was very he helped me a lot to cope up with these negative thoughts at that time. Somehow I coped up with some of my friends and they helped me out who are already in shipping. So, but I will say that oh, I also heard, I think Captain Chaudhary speaking about this and it was very good. But always talk. Even Captain Vijay ने लिखा था इसके बारे में कि बात करो. उन्होंने Yes, अपना sir. एक्सपीरियंस बताया था कि उनके किसी कैडेट ने या किसी जूनियर ऑफिसर ने आई थिंक उनको फोन करा कि ऐसा ऐसा हो रहा है. कैप्टन विजय वॉज फ्रॉम मदरशिप. तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा. If you will not talk, you will keep it to yourself. It will go to something which is not good. तो जो भी हो, जो भी अंदर चल रहा है, बात करो. दोस्त से करो, बंदी से करो, बीवी से करो, मम्मी पापा से करो, जिससे किसी बंदे से करो, बट करो. It is required. That's all. Okay, sir. So coping up के लिए क्या क्या थे? जैसे फैमिली से बात कर ली, शेयर करा चीजें. Yes. So are there some other things जो ऐसे cope up करने के लिए कर सकते हैं? Because like जो कैप्टन है वो एक दिन में तो चेंज होंगे नहीं. Yes, So you need to नहीं होंगी.
Yeah. तो फर्स्टली यू शुड ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस, जो मेरे पास नहीं था। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ईजी होता है, जब आप पहली पहली प्रमोशन में गए, इट इज नॉट ईजी टू कॉन्ट्रडिक्ट अ मास्टर, इट इज नॉट ईजी बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर वर्ड्स व्हाट यू आर सेइंग, बट ट्राई टू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस टू स्पीक टू हिम कि सर मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं नहीं सो पा रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड, आई हैव टू डू 8 hours ऑफ नेविगेशनल वर्क इंडिपेंडेंटली, आप मुझे 6 घंटा रात को सोने दे रहे हो, मैं कैसे जहाँ चलाऊंगा 8 घंटे, ये तो बताओ आप मेरे को। तो टॉक विद द पर्सन whom you are feeling is stressful for you. Yes, sir. हो सकता है वो तुम्हें स्ट्रेस नहीं दे रहा, लेकिन तुमको लग रहा है वो स्ट्रेस दे रहा है, कि तुम्हारे अंदर की सोच है, तो उससे बात करो कि सर आप ये जो कह रहे हो इससे मुझे परेशानी है, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, दिस इज गिविंग मी स्ट्रेस, दिस इज नॉट गिविंग मी स्लीप एट द नाइट। तो उससे भी बात करो, अपने नियर एंड डियर वन से भी बात करो। एंड आई विल से कि जो ये बात की चीज है ना, ये सिर्फ सबके लिए मत रखो जब आप परेशान हो। शिप पे मैंने देखा है, लाइक मेरे को आदत है शिप पे एटलीस्ट 10 मिनट या 15 मिनट रोज मम्मी से या पापा से बात करने की, तो वो बहुत जरूरी है। आई हैव सीन के आजकल हम लोग का जो यूथ है, हम लोग पेरेंट्स थोड़े कट ऑफ रहते हैं यार, 5 दिन में एक बार बात कर लूंगा, 3 दिन में एक बार बात कर लूंगा, बहुत है। बट मैं कह रहा हूँ रोज करो, उससे क्या तुमको एक कॉन्फिडेंस फील होगा दैट दे आर फाइन एट देयर प्लेस एंड दे विल नो यू आर फाइन एट योर प्लेस। और वो जो कॉन्फिडेंस तुम्हें देगा ना, तो तुम्हारा जो नेक्स्ट डे होगा ना, इट विल बी वेरी जॉली, विल बी वेरी हैप्पी। Yes, sir. So talking to your family or the person who makes you happy is very important, even if you are not stressed. They are not only required when you are stressed, they are required at every point of time. When you are Yes, neutral, sir. when you are not, when you are, so that is very important. Okay, sir. So basic thing is to communicate with everyone and Yeah, absolutely. For me. okay, sir. And so there was one more question, like how is the social life on board ship? Like आपस के अंदर ही कुछ बातचीत होती है या सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, या फिर कभी कभी जैसे पार्टीज वगैरह भी होती है शिप पे, देखता है ओकेजनली होती है काफी। See, that depends on, sorry, the master basically, parties होती हैं depending on master, your ship route, ship का रूट बहुत बिजी है, यू आर डूइंग Yes, sir. 20-25 पोस्ट अ मंथ, तो टाइम नहीं मिल पाता है कि पार्टीज होता है, बिकॉज एवरीवन इज बिजी, काम तो है ही। बट आई गेस पार्टी शुड हैपन नॉट मोर तो एटलीस्ट 2 तो 1 महीने में, या 1 तो 1 महीने में होनी चाहिए। Yes, sir. सो ट्रूली स्पीकिंग वो पार्टीज का जो फैशन है वो आजकल चला गया है। Sir, your audio is again gone. ऑडियो चलेगी। Sir, audio. अरे यार, आई एम ऑडिबल नाउ? Yes, sir, you are audible now. ओके। तो जो पुराने लोगों से सुना है कि उस टाइम पे इट वाज फन हैविंग पार्टीज, पीपल यूज्ड टू पार्टी फॉर Yes, sir. 3-4 बिकॉज देयर वाज अल्कोहल, देयर वाज मस्ती। तो इन माय कंपनी लाइक एमएससी इट इज 0% अल्कोहल पॉलिसी। सी ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो योर्स डायरेक्टली इट इज टर्मिनेशन इफ यू आर फाउंड ऑल आपका 0.2% से अबव है एज पर वीपीएम, एज पर आवर कंपनी एसएमएस, तो यू आर आउट। तो नो वन डेयर्स अबाउट दैट। तो फिर वो पार्टी में उतना मजा रह नहीं गया। इवन इफ मास्टर अरेंजेस अ पार्टी, तो बंदे आएंगे, दे हैव देयर डिनर, दे हैव देयर फूड, एंड विद इन हाफ एन आवर 1 आवर एवरीवन इज लाइक चलो बाय बाय। तो you should try to promote social being between all crew, because they are only our family, they are our parents, they are our everything. By arranging some games, by having some fun sessions like we used to have, used to have 6-7 days of sailing between Panama to US, Panama to Europe or US। तो 7-6 days का सेलिंग रहता था। तो वी यूज टू हैव टूर्नामेंट्स, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो हम लोग टूर्नामेंट्स खेलते थे। तो उससे क्या है कि आधा घंटा भी लोग आ रहे हैं, पार्टी में उतने नहीं आते, गेम रखोगे तो फिर भी आ जाएंगे, तो आधा Yes, sir. पौना घंटा भी लोग आ रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक लोगों को भी अच्छा लग रहा है, Hmm. और लोग ये फोन और लैपटॉप छोड़ के आ रहे हैं। Yes, sir. बिकॉज मैक्सिमम पीपल बिकॉज ऑफ लैपटॉप्स आई थिंक उसमें ज्यादा रहते हैं, मूवीज में। एक Hmm. रूम में जाओ, 1 घंटा घर पे बात करेंगे, विच इज रिक्वायर्ड, बात करो, बट लैपटॉप Yes, sir. मूवीज कभी कभी रिक्वायर्ड है, रोज वो करोगे तो उसके फ्रीक हो जाओगे। उससे अलावा Yes, कुछ sir. और करो, ट्राई टू सिट विद पीपल, क्योंकि उसमें क्या है वही कम्युनिकेशन। तो वो हम घर पे तो कर रहे हैं, तो वो पिक्चर के चक्कर में हम घर पे भी कम कर रहे हैं, क्यों पिक्चर देखनी है। तो टॉक विद योर फैमिली, टॉक विद द पर्सन यू आर वर्किंग विद, योर कोलीग्स, योर क्रू, योर सीनियर्स, Yes, sir. एंड गिव लेस फोकस ऑन
watching movies on laptop, sitting in a room alone. Okay, sir. Yes, since we were talking about the social life on board, so I'd like to add one question. What should be the relation between a deck cadet and the crew members? Because I've been told a lot to keep a certain distance. See, it's right. I agree because during my cadetship, like sometimes I used to sit in the crew mess room. The crew mess room and the officer mess room is separate. So कभी कभी tea times में I used to sit with the bosun. So bosun is was from Punjab, from Pathankot and all, and I am also basically a Punjabi. तो बाकी crew गुजराती था और ये सब था. तो मेरी बोसन से थोड़ी ज्यादा अच्छी बात होती थी. It was my first month. उसके बाद बैठ जाता था मैं थोड़ा. So chief officer one day called me and said that try to keep some distance and try having your tea either in your cabin or in the officer mess room. I said okay sir, I did not question him, but later on it was basically right. उसका रीजंस है, काफी रीजंस हैं, बट जितने रीजन मुझे लगते हैं मैं ये बताऊंगा कि स्पेशली व्हेन यू आर अ कैडेट, ऑफिसर बन जाओगे तो आपके पास खुद ही इतना टाइम नहीं होगा कि तुम क्रू के साथ बैठो और गप्पे मारो. तो कैडेटशिप में समटाइम्स क्या होता है कि यू आर नॉट मच मैच्योर्ड टू अंडरस्टैंड द शिपिंग एंड एवरी प्रोफेशन हैज सम पॉलिटिक्स एंड सेम इज ऑन बोर्ड. तो नॉट ट्राई नॉट टू गेट इनटू दैट पॉलिटिक्स. तो क्या होता है कि आप अब ब्रिज पे कुछ बातें सुनते हो, you hear some inner talks about second officer, third officer, chief officer, or whoever. So even if you don't want, but you spill those words. Hello. Hello, sir. How are Evening, you? sir. Good evening, sir. Hi, Yash. Hi, Abhay. Hi, sir. यार आई थिंक मैंने लाइव करा हुआ है आपके साथ. हाँ, हमने मेरे बात साथ एक करी लाइव थी. था, उसमें मैं जब सर शिप पे थे। था. शिप हाँ पे हाँ था. हाँ. चलो एनीवेज, अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे. तो ना चाहते भी क्या होता है, यू यूज्ड टू टेल सम इनर टॉक्स अबाउट द ब्रिज टीम व्हिच इज द ऑफिसर्स एंड ऑल. तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ट्राई टू कीप सम डिस्टेंस विद द क्रू. तो अब तुम नहीं चाहते बट बात करते करते यू स्टार्ट टेलिंग समथिंग अबाउट कि भाई कप्तान ने चीफ ऑफिसर को ऐसा ऐसा बोला, कप्तान ने थर्ड ऑफिसर को की बजाई. तो तुम्हें तो पता नहीं लगा, बट व्हाट विल क्रू डू, इट विल बिकम अ गैली न्यूज, हॉट गैली टॉपिक. न्यूज. वो करेक्ट. इतनी सी बात होगी ए बी और वो जेड तक पहुंचा देंगे. एंड एट द एंड ऑफ ऑल थिंग्स व्हेन इट गेट टू इन द ईयर्स ऑफ द पर्सन हु इज कंसर्न्ड, उसको यही लगेगा कि यार ये बात ना इस कैरेट को पता थी, इस साल ने क्रू में खिलाई है. तो ना बिल्कुल. चाहते हुए भी, हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन who will be the person spoiled? You. So that is the main reason that most of the senior officers or chief officers will advise you कि भाई ज्यादा क्रू के साथ गप्पे मत मारो, जितना काम है उतना करो and then get back to your job. That's all. करेक्ट है सर, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इस बात से. और मेरी शायद इसी बारे में हमारी लाइफ में भी बात हुई थी, क्योंकि मैं आपको बता Yeah. भी रहा था कि मेरे हाँ हाँ. एक्सपीरियंस ऐसे ही चल रहा था कुछ. एंड इट इज टोटली करेक्ट, बिकॉज मेरे को भी टोका गया था कि मैं बैठा था एक बारी क्रू में में, एक नहीं बहुत बार बैठा था. बट Okay. स्टिल मुझे बताया गया ना, जब एक बार चीफ ऑफिसर आशीष कुंदीर ने ही मुझे बोला था, बट उन्होंने थोड़ा एग्जैजरेट करके बोला था. सच बोलूंगा, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बोला था, No बट problem. एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत इट वाज सिमिलर जो भी वो कह रहे थे. बिकॉज आफ्टर ऑल क्रू किसी का भी नहीं है, वो बकवास करते हैं एंड ऑफ द डे. Yes. वो बोलते See, हैं. I will not say that all crew are same. Lot of ये भी people हाँ. you will यस. get into touch with, they are very good. They are very like as third officer, even masters I have seen they learn lot of things from crew. तो लर्निंग तो हम किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, उन लोग से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं.
शिप पे हर बंदे की इंपॉर्टेंस है। 50% हम काम कर रहे हैं तो 50% क्रू काम कर रहा है। क्रू काम नहीं करेगा तुम जहाज नहीं चला सकते। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, इवन अ मास्टर विल एग्री ऑन दिस, दैट बिना क्रू के जहाज नहीं चला सकते। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उनसे गप्पे मत मारो, बट एक लिमिट रखो, एक डिस्टेंस रखो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। शिप पे प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा ना, जब तुम्हें दिखेगा कि तुम उससे गप्पे मौत मार रहे हो और उसे लगेगा तुम फ्रेंडली हो, तो कल को अगर वो तुम्हें एक कंपनी में 100-200 जहाज है, कल को कहीं ना कहीं टकराएगा, तो उसके दिमाग में तुम्हारी वही पिक्चर होगी कि ये तो कैडेट था, ये तो अपना कैडेट बिडू था। था, इसके साथ तो मैंने बड़ी याराना खेला है सारा, हम्म, ये तो अपना यार है। तो वो जो प्रोटोकॉल है ना, एक सीनियर का और एक जूनियर का, वो चला जाएगा। वो चला तो जाएगा। तुम ही सबसे ज्यादा वो बंदे हो गए जो परेशान होगा कि यार साला इसको समझ नहीं आता, मैं कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो ही नीड टू फॉलो दैट एंड नॉट गिव मी हिज ओन फंडास। ही नीड टू डू एज आई एम सेइंग एंड गिव मी एडवाइस। एडवाइस करना और दूसरे बंदे को ऑर्डर देना अलग है। एडवाइस अच्छी लगती है बट ऑर्डर अच्छा नहीं लगता है। तो वो डिस्टेंस जरूरी है। दैट्स ऑल। Okay, sir. Yeah, so I think all most of the questions are covered up. Yeah, Anything all the else if questions you... are. No, everything is covered up, sir. That's it. Okay, great. So anything you want to share? कि मैं नाम भूल गया यार, तुम्हारा क्या नाम है? Kumar, कुंवर sir. कुंवर सर। And कुंवर। sir, sorry, sir, I'm not aware about which company and which post you are on. Sir. If you can just introduce yourself. यार मैं भाई एक शिप कर रही है, कैडेट ही हूँ, एमएससी में सेल Okay, कर रहा okay, हूँ। एंड okay. ही या इज यार माय तुम्हारा तो सीनियर आई थिंक टाइम हो एक्चुअली काफी गया। अभी। टाइम हो गया वन था सेकेंड। कुंवर। डीएनएस आई थिंक लास्ट 31। ईयर यू वाज ऑन फर्स्ट शिप, क्या हो गया? नहीं, आई सर आई डिड अबाउट 10 months 24 days on my first ship. Oh, Yeah. कौन सा शिप किया था तुमने? एमएससी मिकेला। अच्छा, तुमने मतलब अभी उसमें मेरे बैच का एमएस ही है कोई। तुमने सर आपका मतलब जो एमएससी जिसको की आपने चेंज किया गोल्डन उसका जहाज नाम क्या नहीं था? देखी? सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ मतलब तुमने एमएससी की अभी तक कमाल के जहाज जो होते हैं वो नहीं देखे? नहीं, बस सुना है उनके बारे में, अमेरिका वगैरह, बट करे नहीं है। अच्छा, मैंने मतलब वन ऑफ द अच्छा जहाज किया, पहला शिप। सो तो व्हेन डिड यू साइन ऑफ? आई साइंड ऑफ इन अक्टूबर 10th, सो व्हेन आर यू प्लानिंग टू ज्वाइन? in next 10-15 days. ओके, इज योर शिप इज Yeah. प्लान्ड? No, not yet. ओके एक्चुअली डीएलपी अप्रूव होना है अभी। विकास ओके। अग्रवाल सर चेंज हो गए हैं, अच्छा, एमएससी के इंचार्ज में हाँ, रहे नहीं है अब। अच्छा, तो कौन हो कौन है गया? वो? अभी थोड़ा, अभी पता नहीं, इट इज सम पीपी शर्मा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। कुछ नए हैं। हाँ, नए हैं अभी। नहीं, यस। हाँ, तो उनसे अभी बस अप्रूवल है, देन तो नॉर्मल प्रोसीजर। मेरे पीछे तो वो सोनिया पड़ी हुई है कि जाओ जाओ यहाँ से। वो तो बहुत। तुम कहाँ से? यू आर फ्रॉम चंडीगढ़? वेयर आर यू फ्रॉम? नो नो, आई एम फ्रॉम नोएडा। अच्छा, वेरी गुड यार, गेट इन टच कॉलेज विद के मी, पास ही मीट मी रहते थे समथिंग, सब लोग। आई वुड लाइक टू मीट वेयर यू। डू यू लिव, वेयर डू यू लिव? आई लिव गाजियाबाद, वैशाली। ओह ओके ओके, आई एम इन या सेक्टर 40 इन नोएडा। ओके, चलो ठीक है, गेट इन टच विद मी, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, वेल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत जो चीजें तुम सोचते हो ना, जो हमने की सुबह ब्रिज की हम्म, क्लीनिंग वगैरह सब करी है भाई, सब करी, लिटरली बहुत ज्यादा करी है। और कई कई ये दिन ऐसे भी गए हैं कि डेक की सफाइयों में पूरा दिन चला गया है, कार्गो होल्ड की ब्रूमिंग में पूरा दिन चला गया है। बट यस, वो इनिशियल स्टार्टिंग थी। दो चीफ ऑफिसर आशीष बंदीर एंड चीफ ऑफिसर पवन कुमार, उन्होंने मुझे ऐसे ही स्टार्ट करवाया था। बट यस, सबसे मुझे सीखने को जरूर मिला। मैं ठीक है, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा वो 7 महीने, करेक्ट है वो। बट उन्होंने मुझे सिखाया भी काफी कुछ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे लाइक पॉज डाल दिया था, एक हॉल्ट डाल दिया था, ऐसा नहीं था। क्योंकि लास्ट में चीफ ऑफिसर आशीष मंदिर भी यही स्टेटमेंट कह के गए जब सर्वेयर्स ऑन बोर्ड थे एंड दूसरे चीफ ऑफिसर भी ऑन बोर्ड थे एंड में, कि माई कैडेट विल शो यू एवरी टाइम, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा सर इतना बोल गए बहुत है मेरे लिए, मेरी शिपिंग मतलब फर्स्ट शिप का कंप्लीट हो गया है। तो ये गुड। बैड एक्सपीरियंसेस थे, काफी थे, बट अच्छे बहुत ज्यादा ही थे। शुरुआत ऐसी Everyone हुई। do learn from their bad experiences, to यस, be honest. एब्सोल्युटली I was sharing एब्सोल्युटली। my own experience with the master, तो मैं कभी भी उनको ये नहीं कहता। आज भी उनसे टच में रहता हूँ। आज भी उनका पक्का एक मच्छी जा रखा होगा, साले तूने बहुत गाली दी मेरे को, ही स्टिल टचिंग मी एंड इज वेरी फ्रेंडली टू मी। बट मैं उन्हें कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, सर बहुत सीखा आपसे, पर वो थोड़ा तमीज से भी सिखा सकते थे। तो आपने इतना दैट इज बोल फाइन। दिया। तो वो ज़रूरी होता है। कभी कभी मेरे को लगता है जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे हम शायद सीखेंगे मैनेजमेंट रैंक्स में, मे बी, लेट्स सी। तो चलो, वील रैप अप दिस।
and Okay, sir. get into touch later on. Thank you so Okay. much for joining this live, Thank you sir. so Thank you so much. much. Thank you so Yeah. much, everyone. And I hope everyone enjoyed the session, and see you again. Thank you so much. Good night. Thank you so Thank much. you, sir. Good night, sir. I'll just end the session. Bye, sir. Good night.